Very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are fine and everybody is fine at home, children. Children, I hope you all are studying properly and doing your work properly, giving the proper time for the studies, and I hope you all are working according to the syllabus, according to the pattern, and the most important, you are watching the videos as it is very helpful for you, children. Maybe you will not consider it so important, but really after watching the video at least you gain something, and it is a thing which makes your revisions. And you know, children, the more and more you revise, your learning will become more better. So I hope you consider my suggestion. With this, I am going to start my topic. The topic which I am going to discuss with you is the development of psychology in India. Children, as you all know that we are doing the revisions of the chapter. First, what is psychology? As we have discussed in the class, we had done the revisions of the learning chapter, memory chapter, sensory, attentional and perceptual process. Right now from the initial we are doing the revisions of the chapter what is psychology. In that regarding, we have studied about the meaning of psychology, the definitions of psychology, what is mental process, what is experiences, what is behavior, that we have studied. Then we have studied the evolution of psychology. Earlier I have made the video on the evolution of psychology, and yesterday I have made the video on psychologist at work, which belong to this chapter only. Today again I am making you to understand that basically you all have learned about the psychology evolution. आप सभी ने साइकोलॉजी के ओरिजिन के बारे में तो पढ़ा है. आपने ये पढ़ा है कि साइकोलॉजी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ठीक है, यू नो अबाउट इट. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज हाउ इट इज डेवलप्ड इन इंडिया. ये आपने नहीं पढ़ा. सबसे पहले इसका डेवलपमेंट वेस्टर्न में ही हुआ है और लिप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी में सबसे पहला लैब इस्टेब्लिश किया गया by the Wilhelm Wundt in 1879 is the date, and obviously afterward it come in our nation also. Okay, so let us study about the development of psychology in India. Development of psychology in India. चिल्ड्रन, इंडिया में भी डेवलपमेंट हुए हैं साइकोलॉजी के, एंड व्हेन द डेवलपमेंट केम इट इज़ वेरी मच वाइड स्प्रेड. ठीक है, बहुत जल्दी ये वाइड स्प्रेड हुआ है. The Indian philosophical tradition, basically इंडिया में सबसे पहले इसका सबसे इम्पोर्टेंट रूट फिलॉसफी रहा है. फिलॉसफी से ही साइकोलॉजी को ओरिजिनेट किया गया. सो हमारा जो इंडियन फिलॉसफिकल ट्रेडिशन है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है इन इट्स फोकस ऑन मेंटल प्रोसेसेस एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, self, mind-body relation, and a variety of mental function such as cognition, perception, illusion, attention and reasoning, etc. तो आप देख सकते हो बच्चों, हमारे इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इससे रिलेटेड है.
Okay, our Indian philosophical tradition was rooted and they have a focus on consciousness and different kind of mental processes. They have a very much focus on this concept of self, the relationship between the mind and body, how the mind and body is related to it, how we get affected, so our mind is also get affected. Unfortunately, philosophical roots in the Indian tradition have not influenced the development of modern psychology in India. The development of the discipline in India continue to be dominated by Western psychology. Western psychology से ज़्यादा ये dominate हुआ. Although some attempts have been made to find points of departure. So children, I hope you are understanding that the development of psychology in India is very much dominated by the Western psychology and it is less dominated by the ancient philosophical roots. Although some attempts have been made to find points of departure both within the country and abroad, these attempts have tried to establish the truth value of various assertions in Indian philosophical tradition through scientific study. Basically, India में psychology का development करना it's not an easy task. So many changes have taken place as well as so many reformation have taken place. The most important, a different kind of assertions were made and their reasons were given through scientific studies. The modern era of Indian psychology began in the Department of Philosophy at Calcutta University, where the first syllabus of experimental psychology was introduced. So, in regarding to the development of psychology in India, you can say that it was developed in India first of all in the Calcutta University. Calcutta is the place in India where the psychology development have taken place. So सबसे पहले कैलकटा यूनिवर्सिटी में और अपनी डिपार्टमेंट नहीं थे, कैलकटा यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, ओके, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी के डिपार्टमेंट में फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी नाम का पेपर कंडक्ट हुआ था, ठीक है, इंट्रोड्यूस हुआ था एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है. कैलकाटा यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी डिपार्टमेंट में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था. दिस इज द फर्स्ट रिवॉल्यूशन विच टेकन प्लेस इन इंडिया. Then the first psychological lab was established in 1915. Then सबसे पहला psychological lab establish हुआ था कैलकाटा यूनिवर्सिटी में ही. The year was 1915. Again, it is a very remarkable year and the day for you all to remember in reference to the development of psychology in India. The first psychology
lab was established in Calcutta University in 1915. Okay, I hope you all have noted down these things very properly. Now moving forward, I think this much is very properly encoded in your memory system, and I hope you have stored it also. So the first paper or the first subject of experimental psychology was introduced in Calcutta University in the Department of Philosophy. Then in 1915, the first Department of Psychology was established in Calcutta University. Calcutta University started the first Department of Psychology, in the year 1916. So children, very much remember this 2 years very properly, 1915 and 1916. 1915 में लैब बना था, लैब, ओके, साइकोलॉजिकल लैब बना था, कहाँ पे? सेम कैलकटा यूनिवर्सिटी में. सो कैलकटा यूनिवर्सिटी आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है. 1916 में आपका खुद का डिपार्टमेंट बना था, द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी. कहाँ पे? सेम प्लेस in Calcutta University. So remember the children, these two dates are very important in the development of psychology in India, 1915 and 1916. Another department of applied psychology in 1938. The third year which you all have to be remember is 1938. 1938 में दूसरा एक अनदर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इस्टेब्लिश हुआ था, एंड दैट डिपार्टमेंट इज ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी. दिस इज इम्पॉर्टेंट. ये बेसिक साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट था और ये इस ईयर में अप्लाइड साइकोलॉजी का एक डिपार्टमेंट ओपन किया इन लोगों ने कैलकटा यूनिवर्सिटी में ही in 1938. I just want from you all to write it down these dates while watching the video, as it will be helpful for you. So I hope you are clear that how the development is taking place in India. It is first take place in Calcutta University in 1915. Sorry, not 1915. Before the 1915, experimental psychology paper was introduced in Calcutta University in philosophy department, but the first lab was established in Calcutta University in 1915, and then खुद का डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इस्टेब्लिश हुआ 1916 में. 38 में एक और डिपार्टमेंट इन्होंने इस्टेब्लिश किया विच इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ द अप्लाइड साइकोलॉजी. The beginning of modern applied experimental psychology at Calcutta University was greatly influenced by the Indian psychologist Dr. N.N. Gupta, who was trained in USA and in the experimental tradition of Wundt. Very important. Wundt वो हैं जिन्होंने who is known to be the father of psychology, जिन्होंने साइकोलॉजी को यहाँ लाया और अभी ये है कॉन्सिक्वेंस एंड रिजल्ट कि हम लोग इसे पढ़ रहे हैं, आप लोग इसको पढ़ रहे हो, एंड नाउ इट्स इमर्जिंग इन अ वेरी वास्ट वे. सो सल्यूट टू हिम, एंड वी एज अ बिलोंग टू दिस फील्ड, दिस एरा, so we should be very thankful to the Wilhelm Wundt, who has given us such a beautiful discipline, such a interesting discipline, and it's our responsibility is to take it forward now. So India में N.N. Gupta, remember the N.N. Gupta was equally important at the Wundt because he was trained under the Wundt. He was trained in the USA under the guidance of the Wundt and established the psychology thing in India. So the name was N.N. Gupta. I hope you all have written it down, so I am rubbing it. C
See student, whatever the things I am writing on the board, they are the milestones, so you should write it properly. So remember this name again. With the year you have to remember the names of some of the psychologists like Dr. N.N. Sen Gupta. N.N. Sen Gupta, don't forget his name. N.N. Sen Gupta, जिन्होंने वुंड में विल्हेम वुंड के अंदर ट्रेनिंग ली थी. विल्हेम वुंड, who is known to be the father of psychology. ठीक है. The beginning of modern experimental psychology at Calcutta University was greatly influenced by the Indian psychologist Dr. N.N. Sen Gupta, who was trained in USA in the experimental tradition of Wundt. Professor G. Bose was trained in Freudian psychoanalysis, another area which influenced the early development of psychology in India. Similarly, as Indian psychologist named N.N. Sen Gupta is very famous, so similarly the second psychologist whose name was G. Bose. Okay, Professor G. Bose. Don't forget this name. N.N. Sen Gupta and G. Bose. इन्होंने किसके अंदर ट्रेनिंग ली थी? He was trained under the सिगमंड फ्रेड. सिगमंड फ्रेड की जो साइको एनालिसिस की टेक्निक थी वो इन्होंने उसमें ट्रेनिंग लिया था. सिगमंड फ्रेड. ठीक है, रिमेंबर दिस डेट प्रॉपरली. So Professor Bose established Indian Psychoanalytic Association in 1922. इन्होंने भी बहुत ही रिमार्केबल वर्क एंड रिमार्केबल जॉब किया था इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. इन्होंने सबसे साइको एनालिटिकल एसोसिएशन इस्टेब्लिश किया था. एक एसोसिएशन का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया था जहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं दे यूजली वर्क ऑन दिस वन डूइंग द साइको एनालिसिस. तो उन्होंने यही इस्टेब्लिश किया था और and it was established in 1922. So we are getting so many dates. I can write down here the dates so that you will always remember. 1915, 1916, 1938, 1922. 1922 में जी बोस ने साइको एनालिटिक एसोसिएशन इस्टेब्लिश किया था. साइको psychoanalytic association was established by the Professor G. Bose in 1922. ठीक है. 1938 में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी बना था. अगेन मैं एक बार रिमेंबर करूँगी. 1915 में आपका फर्स्ट यू कैन से द लैब बना था इंडिया में और कैलकाटा यूनिवर्सिटी में. 1960 में आपका खुद का डिपार्टमेंट बना था कैलकाटा में. अनदर डिपार्टमेंट बना था अप्लाइड साइकोलॉजी का 1938 में. साइकोलॉजी को इंडिया में डेवलपमेंट के लिए द पर्सन हु आर वेरी इंपॉर्टेंट आर एन सेन गुप्ता एंड जी बोस. एन सेन गुप्ता ने विल्हेम वुंड के अंडर ट्रेन करके उस एक्सपर्ट्स को इंडिया में लाया और जी बोस ने सिगमंड फ्रेड के अंडर ट्रेनिंग लेके 1922 में उन्होंने साइको एनालिटिक एसोसिएशन इस्टेब्लिश किया जिसमें different kind of psychologists become a part of that one and they work toward the progress of the psychology field, progress of this particular discipline, and we are just studies about their research and experiments. Now moving to the next one. The Department of Psychology in the University of Mysore and Patna were other early centers of teaching and research in psychology.
सो आगे बढ़ते हैं, यानी कैलकाटा यूनिवर्सिटी के बाद हम ये जानेंगे ना कहीं और साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, तो वो था यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर एंड पटना. रिमेंबर दिस यूनिवर्सिटी ऑल्सो चिल्ड्रन, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर एंड पटना. ठीक है, यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था. बट ये जो यूनिवर्सिटी थी ये बेसिकली लैब वर्क नहीं करती थे, यानी एक्सपेरिमेंटल्स नहीं. दे आर बेसिकली मेड फॉर द रिसर्च एंड फॉर टीचिंग पर्पज. Their main purpose was to do the research in psychology as well as do the teachings. Laboratory experiments was less here. So I hope children up to this much is clear to you all. Okay. So from these modest beginnings, the modern psychology has grown as a strong discipline in India with a large number of centers of teaching, research and application. There are 2 centers of excellence in psychology supported by the UGC University Grant Commission at Utkal University, Bhubaneswar and at the University of Allahabad. बेसिकली अगर बच्चों में आपको बताऊं कि इंडिया में कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है साइकोलॉजी का, तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुए हैं यूनिवर्सिटी वाइज, सो सबसे पहला डेवलपमेंट आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा है, देन मैसूर एंड पटना है, देन आपकी उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में, एंड उसके बाद आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी. देन फिर अदर सेंटर्स, अदर डिस्ट्रिक्ट्स में यूनिवर्सिटीज बने, वेयर द साइकोलॉजी लैब वॉज देयर, वेयर देयर ओन डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी वॉज देयर. In Varanasi also, in our Banaras Hindu University, the BHU also having a very marvelous psychology department, and so many research and teachings were happening there in the field of psychology. About 70 universities offer courses in psychology. 70 universities हैं जो कि psychology कोर्स को ऑफर करती है. मोर देन मे बी देर में बी मोर देन 70 यूनिवर्सिटी. आई एम टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन 70 नॉट 17, 70. ओके, सो अप टू दिस आई जस्ट होप दैट यू हैड क्लियर योर कंसेप्ट्स. सो हम लोग आगे बढ़े. हम लोग ने बहुत सी चीज़ें जानी, ईयर्स जाने, कौन कौन से ईयर्स इंपॉर्टेंट है, हुज पर्सन्स आर इम्पॉर्टेंट, विच यूनिवर्सिटी वॉज देयर हु हैड एस्टैब्लिश सच थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग को जानना है इससे भी कुछ आगे बातें, एंड आई एम रबिंग इट विद द होप दैट यू हैव रिटन, you are taking the screenshot or you have making the notes. Durganand Sinha in his book D. Sinha, another name, another Indian psychologist who is very much famous and who has done a very much job in the field of psychology. D. Sinha. D. Sinha in his book Psychology in a Third World Country, the Indian Experience, established in 1986, traces the history of modern psychology as a social science in India in 4 phases. Very important work which was done by the D. Sinha, and his full name is Durganand Sinha. उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था Psychology in a Third World Country. Psychology in a
psychology in a third world country. Okay, so he has written this book, whose book was named as Psychology in a Third World Country, The Indian Experience. ये इनकी बुक का नाम था बच्चों, साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, द इंडियन एक्सपीरियंस. The Indian experience. Psychology in a third world country, the Indian experience. It is the name of the book, children. Okay, D. Sinha ने ये बुक लिखी थी, and the year was 1986. कब दिया था उन्होंने? 1986. So आप डेट याद करते जाएंगे. 1915, 1916, 1938. Then आपका है 1922. Okay, and next is the 1986. Again I am repeating, 1915 lab, 1916 Department of Psychology, 1938 is the date of Department of Applied Psychology, 1922 Psychoanalytic Association, which was developed by the G. Bose. Okay, and then 1986 by D. Sinha, who has written this book, this remarkable book, Psychology in a Third World Country, The Indian Experience. So इसमें इन्होंने 4 phases के बारे में डिस्कस किया है. 4 phases हैं जिनमें कि इंडिया का डेवलपमेंट हुआ है. So let us study about all these 4 phases. Before studying about the 4 phases, I want to discuss you with something. Psychology in India is now been applied in different professional areas. Not only have psychologists been working with children having special problem, they are employed in hospitals as clinical psychologists, in corporate organization in the HRD and advertising department, in sport directorates in the developmental center and in IT industry. बेसिकली इसका स्कोप अब बहुत ही ज़्यादा वाइड हो गया है. ऐसा नहीं है कि सबसे पहले बहुत पहले सिर्फ साइकोलॉजी को क्लिनिकल एरिया तक ही रिस्ट्रिक्ट किया जाता था, वहीं तक ही वो रिस्ट्रिक्टेड था और उसी को ही हम लोग मानते थे कि डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, साइकोलॉजी का. बट अभी साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा ही वास्ट स्कोप है. कोई आई डोंट थिंक कि एनी एरिया इज लेफ्ट वेयर इट्स डेवलपमेंट हैव नॉट टेकन प्लेस. कोई ऐसा एरिया बचा हो जहाँ इसका डेवलपमेंट ना हुआ हो. सो इट इज़ नाउ ग्रोइंग इन अ वेरी वास्ट वे. So basically, I hope the topic is understandable to you children. You understand the topic very well. So which I am telling you about that D. Sinha has written this book in the year 1986, and in his book he described the development of psychology in India in the 4 phases. Like in the first phase, till independence was a phase with emphasis on experimental, psychoanalytic and psychological testing research. ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा रिफ्लेक्शन था. Then in the second phase, till 1960 was a phase of expansion of psychology in India into different branches of psychology. ठीक है, यानी फर्स्ट फेज में क्या था, टिल इंडिपेंडेंस तक 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ है. इंडिपेंडेंस तक हमारा रिफ्लेक्शन जो भी था साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पे था, साइको एनालिटिक पे था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट पे था. फिर उसके बाद 1960 में सेकेंड फेज आया जिसमें कि एक्सपेंशन और भी ज़्यादा हुआ साइकोलॉजी का. द थर्ड फेज आपका 1970s में आया
जिसमें न्यू आइडेंटिटी ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया लेड टू द फेज ऑफ इंडाइजिनेशन विच स्टार्टेड ड्यूरिंग द लेट 1970s। ठीक है, और फिर उसके बाद 1980s में आते आते लोगों ने जो वेस्टर्न फ्रेमवर्क थे उनको रिजेक्ट किया और इंडियन साइकोलॉजी स्ट्रेस द नीड ऑफ डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन अ फ्रेमवर्क। तो इस तरीके से 4 फेजेस में डी सिन्हा ने अपनी इस बुक में एक्सप्लेन किया। So I hope the topic which I discussed with you today is about the development of psychology in India is better understand to you. And still if you have any doubt, you ask in the classroom, children. Thank you so much for carefully observing this video.